شرم تو ہمیں آنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی ہے آگے بڑھنے کی، اور وہ ہے فرانسسکو۔ بہت ساری چیزیں یہ انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں، بنگلہ دیش سے امپورٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان سے امپورٹ نہیں کرتے۔ Natural bee honey with quality, organic. If you had in your country, this country really demands a lot of honey. سن لیا، دیکھ لیا، شرم آ گئی۔ یہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں پروڈکٹس ایسی ہیں جو ہم لوگ یہاں پر بیچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نہیں بیچنا جو ہم بناتے ہیں، ہمیں وہ بیچنا ہے جو ان کو چاہیے۔ تو پھر دیکھو منڈی آپ کے لیے کھلی ہے، تھائی لینڈ کے ہم سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش پیچھے سے آگے نکل گیا، انڈیا ہم سے ہے ہی آگے تھا، سری لنکا تک ترقی کر رہا ہے، اور ایک ہم میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے اس ملک میں کرنا کیا۔ السلام علیکم شہینو، شرم تو ہمیں آنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی ہے آگے بڑھنے کی۔ میں اس ٹائم ایک بہت بڑے اسٹور میں ہوں، جہاں پر ہزاروں لاکھوں پائلٹس پڑے ہیں۔ یہ ون آف دا مین جو ایک ہول سیل ڈسٹریبیوٹر ہے نیو یارک میں اس کے پاس کھڑا ہوں، اور وہ ہے فرانسسکو، رائٹ۔ ان کو بہت ساری چیزیں یہ انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں، بنگلہ دیش سے امپورٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان سے امپورٹ نہیں کرتے، اور انہیں یہ کیا کیا چاہیے ہے پاکستان سے، اس پہ ہم لوگ بات کریں گے جناب۔ کوشش کرتے ہیں مل کے پاکستان کی ایکسپورٹ بنانے کی، رائٹ۔ ہیلو فرانسسکو۔ Hi, how are you, Mr. I'm Osman? good. How about you? I'm doing great. I heard you are a senator as well in... Yeah, that's correct. Why, my God. Or a senator is selling a hell of stuff in New York. So how many products do you sell in a day? We basically sell about, let's say, in terms of value of money, it's around $250,000 every day. Yep. $250,000 a day. A day, Right? that's correct. And how many of the percentage of money or volume is from Pakistan? Very few. We really have no Pakistan supplier at this moment. No, So he is the supplier. Why don't you buy from Pakistan, Mr. Adnan? The reason is, the quality, and again, the same issues we discussed before. The people has a lot of issues. They have health problems. But the whole country is not like that. There will be good people there as well, So right? I'm here to handle it. And every sort. Like. So what should we fix first? The quality. The quality Yes. and the promises, right? Yes. So Francisco, you are having some products like that's comfort tablets. okay, Yeah, خوشبو. Oh yeah, دیکھو یہ خوشبو انڈیا تو آ رہی ہے. And what is this, sir? This is monosodium. monosodium glutamate. And we have a lot other stuff. That We like to bring from Pakistan, what you say is an agriculture country, some brown sugar, which is So how much brown sugar do you need every week? a container every week. Every week a container, right? Yes. Where is the brown sugar, sir? Here is the brown sugar, right? So do you need a container, right? Yes. Every week. Okay, Yes. so if we can give you brown sugar at a good price, right? This is Right? definitely- So can you sell to other wholesalers as well? Oh, definitely. That's our intention. So That's what what will we be do the- every day. Every day, all over the Not country. even we can do it in South America, where Mexico, Dominican Republic. He belongs to Dominican Republic. We have Mexican distributor here. We have Guatemala. We have The whole world is over there, right? My that God. side, Brazil. I have very good friends in Brazil. They are distributors. They are located here. They supply from here to Brazil, and all over the places. But the only thing is, we have to take out those things. My grandfather died. We have problem in the hospital. We are in problem. Kahaniyan. That's all like stories. All So we right. have to get out of the stories because nobody care about your problems. Your problem, like? Because we have problems here. Because we are paying the rents. If you ask about the rent over here, it's more than $50,000 a month. All The right. electric, the insurance, the employees, everybody. So you have to pay at the end of it. You cannot tell them that, I have low sale this month, so I cannot pay you. No. So all right, Francisco, tell me, people say that Pakistan export is lacking, right? So anyone ever contacted you from Pakistan embassy, or any Pakistan ever visited you to sell you something? I can say yes. In the past, a company from Pakistani used to bring One company. one company. And yes. from a country of 250 million people, right? That's correct. One company they used to bring garlic paste. I believe the name is Sham, which is very good quality garlic shake. That could be another line in the future. Shan distributor, Shan right? And now India has taken the name Shan. Yes. Yes. That's like if we what he told me about the Shan, the spices.
you know, because in Dominican, the people... They love spices, they right? Like No, spices. they don't like spicy. They don't like so spicy? much. But we sell spices in Dominican, I think. Yeah, Pakistan but not the same type of spicy like said like in Pakistan or Yes, India. we can manage those Oh, standards. absolutely, You know, we have to manage the standard because, you know, everything is possible. Everything we can do it. But the only thing is, still the time we have to have that promises with ourselves that I can definitely can do it. Nothing is impossible. So what's in your hand, sir? This is something. We are agricultural country, so these things. Yeah, oats. Yeah. Yes. The oats. So how many of these containers you need? That's like sugar. That's the American is sugar and oats. They love oats. Very, So how very- many containers in a I week? can say easily 2-3 containers. 2-3 every containers month. every month, right? Yes. This is But, that's very important. Osman, this one, Francisco is talking about his customer. Yeah, You know, that's whatever correct. his capacity is. Give me like 30 containers a week, I can sell it here. You know, because I 13 containers a a month. week. I'm talking about a month. The reason is we have a lot of distribution here, which is going Yes. to different countries. That's correct. But again, quality, time, and no compromise on quality. Again. Very, very important item that maybe you can supply here in America is the honey. Natural bee honey with quality, organic. That's something that if you had in your country, this country really demands a lot of honey. Alright जनाब, सुन लिया, देख लिया, शर्म आ गई। $20 बिलियन तो उतने सी जा ही पा नहीं रहे। सबसे हमें पहले ये करना है कि पाकिस्तान में क्या क्या बनता है और कौन कौन बनाता है, इसकी डायरेक्टरी बिल्ड करो, लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाओ। फ्रांसिस्को ने कहा एक पाकिस्तानी आता था, एक पाकिस्तानी जिसने इसको आगे सिर्फ अपना गार्लिक का पेस्ट बेचा। यहाँ पर हजारों नहीं लाखों प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हम लोग यहाँ पर बेच सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं बेचना जो हम बनाते हैं, हमें वो बेचना है जो इनको चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करना है। तो फिर देखो मंडी आपके लिए खुली है। मैं ये सवाल करता हूँ पाकिस्तान के हर साहिब इस्तेताज से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से, कि हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो कहाँ पर है, कहाँ पर है हमारे पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी डेटाबेस, वेरीफाइड ऑथेंटिक डेटाबेस, जिसके अंदर गंदे अंडे लदा हों, अच्छे अंडे लदा हों, ताकि फ्रांसिस्को जब पाकिस्तान के साथ ऑर्डर सप्लाई करे तो उसको वही सप्लाई किया जाए जिसका उस कस्टमर ने या सप्लायर ने वादा किया। और अगर कोई अपना प्रॉमिस तोड़े, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करे, तो उसको बैन कर दिया जाए उस एक्सपोर्ट के लिए उस मुल्क के अंदर। उसका नाम जो है एक शर्म का मकाम बना दिया जाए, ताकि कोई दूसरा शख्स उस मुल्क से सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करने का जुर्म ना कर सके। क्योंकि आप किसी एक शख्स के साथ जुर्म नहीं करते हो, आप पूरी मुल्क के साथ गद्दारी करते हो, और गद्दार को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जो पाकिस्तान से सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट पाकिस्तान से बाहर भेजता है ना, वो पाकिस्तान का गद्दार है। तो हमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, नहीं बढ़ाएंगे ना तो आपस में लड़ लड़ के हम मर जाएंगे। और इसकी मिसाल हम पाकिस्तान के कई हिस्सों में देख सकते हैं कि वहां पर खाना जंगी लगी है। अगर हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे तो हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। थाईलैंड पीछे से निकल के हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश पीछे से आगे निकल गया, इंडिया हमसे है ही आगे था, चाइना हमारे इर्द गिर्द का हर मुल्क इवन श्रीलंका तक तरक्की कर रहा है। और एक हम में कभी भी फैसला नहीं कर पा रहे कि हमने इस मुल्क में करना क्या है। थैंक यू फ्रॉम न्यूयॉर्क।